So that was the first thing. What else are you going to teach us today? Secondly, we'll start from home. Okay. Usually जो harassment के cases होते हैं, they start from home. It could be either sexual harassment, it could be sexual abuse, or it could be Abuse. Exactly, or domestic violence. ये तीन cases जो है ना, हम फिलहाल rape prevention को नहीं देख रहे हैं. You will not go to that extreme, again, shortage of time and not skill, but I would say manpower. So secondly, what happens is we'll start with domestic violence. Okay. कि आपको पता है कि आपके अंकल हैं, अब्बू हैं, घर के जो joint family system में usually होता है कि घर के कोई बड़े होते हैं, and what they do is they to assert dominance या कोई किसी भी तरह घर की situations को deal करने के लिए they usually beat someone up, right? तो आपको पता है कि आपके छोटे भाई की छोटी बहन की पिटाई हो रही है, या बड़े भाई बड़ी बहन की पिटाई हो रही है, अब्बू पिटाई कर रहे हैं, ताया अब्बू पिटाई कर रहे हैं, and you don't know what to do, right? So there are two things that how we neutralize the situation. Number one is we neutralize the threat properly. Secondly, we make sure that you just neutralize that very happening incident. For instance, if he was, for example, Johanna, you're my family member and he's trying to beat you. Okay. So how I would neutralize this threat is कि अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इनको ये situation neutralize करूँ और उसके बाद ये मुझे मारे ना, Okay. तो उसके लिए different approach होगी. अगर मैं चाहता हूँ कि if I don't worry and don't care about whatever happens next, लेकिन इस time मेरी priority आपको बचाना है, तो उसके लिए different है. Okay. The first thing, the thing that I will teach you is to neutralize the entire situation. So we call this a rear naked choke. We reach from behind. Brazilian Jiu-Jitsu जो है ना, एक जो art है grappling का, ये उसका part है, mixed martial arts का भी part है. We reach behind the person, we wrap our arms around the neck, and then we choke. We try to choke them out, and we do choke them out. So basically, so if his attention is on you, his focus is on you, right? So he does not know कि मैं पीछे से आ रहा हूँ. So usually actually होता है कि height में लंबे होते हैं, तो उसको हम जरा next level में adjust करेंगे. So at this point, what I do is I reach from behind और अपना हाथ में इनकी गर्दन के across यूँ लेके आता हूँ. Okay. And I try to grab the back of his shoulder, right? Like this. So I cup my hand here. दूसरा हाथ, I will slide it. I'll face my palm towards my own face. I go here. जब तक मुझे उनका दूसरा कान feel नहीं होता, and I'll grab my own bicep from this side. Okay. And now I'll start squeezing. अच्छा, when you feel the squeeze, मेरे हाथ के ऊपर आप जो है ना जोर से tap कीजिएगा, ठीक है? So I start squeezing like this. What this does is कि anatomy, अगर जिनको जो देख रहे होंगे, anatomy जिनको पता है, आपकी जो है ना दो carotid arteries होती हैं on both sides of your neck. When your heart pumps the fresh blood to the brain, this is what we're trying to block. Okay. तो जब कोई कहते हैं किसी को choke कर दिया, सांस बंद करने को हम choke नहीं कहते. He can breathe perfectly fine, but the problem is the blood flow to the brain stops, जिसकी वजह से brain shut down कर जाता है. अगर आप 5 या 7 सेकंड इसको जो है ना hold करके रखें, तो they can pass out for sure. Can I try this? You can definitely. That is exactly what we're going to do. अब इस situation में what's happening is कि he's taller than you. Okay. Correct? तो you can't really reach. आपको detail ये चाहिए होती है कि when you wrap your arm around their neck, you need your elbow to be right underneath their chin. अगर मेरा हाथ बाजू यहाँ पे है, it's not going to work. Okay. Right? So I need to be here. Here. Right around, ताकि आपका बाइसेप एक साइड से carotid artery को ब्लॉक करे, आपका forearm दूसरी तरफ से जो है ना carotid artery को ब्लॉक करे, उसके बाद you reach back. Now the problem is women are usually short heighted, men are tall. तो उसमें हम ये करते हैं कि when you reach from behind, we go over the shoulders, and then we give them a hard pull backwards. जब मैं hard pull करूँगा पीछे की तरफ, he will fall backwards on me. This is when I want to reach for the choke, right? So we can try it. Right. So आप दोनों fight कर रहे हैं? Yes. And So first, yes, there you go. There you go, yes. So now left, you will take your other hand, yes, और इस हाथ को yes. there, yes, and try to now try to reduce the gap. Try to squeeze the gap in. Try आपने tap करना है so you can feel, yes, there you go. Right?
So now another thing that I want to mention here is that the way you guys were having fun with it, correct? What we do is when we practice this, we are very serious, right? Because we know what happens is that this is quite normal. जहाँ भी हम teach करते हैं, ख़वातीन usually यही होता है कि जो भी ख़वातीन भी बल्कि मर्द भी जब वो सीखते हैं तो उनको हंसी आती है obviously, oh my god this is so amazing कि मुझे feel हो रहा है कि जो कुछ हो रहा है. तो the problem is कि जब आप इसको इतने हंसी खुशी है इस टाइम पे प्रैक्टिस करें, लेकिन जब आपके सामने एक प्रॉब्लम आई है, एक सिचुएशन आपके सामने जो है ना आकर हो रही है, तो उस टाइम पे you will not be laughing, उस टाइम पे आपके इमोशंस डिफरेंट होंगे, उस टाइम पे you will be scared. So इस टाइम पे you have to try and contain your emotions a little or excitement थोड़े जो ना control करना है. Understandable, right? So let's be serious, straight face this. Right. So इसी तरह जो ना you have to keep practicing this way. So we'll go through it again. Step by step. लेकिन इसके लिए I'll just ask you कि आप अगर अपनी knees पे बैठ जाएं ताकि हम easily जो है ना कर सकें. हाँ जी. So now when you reach for his neck, right? अगर आप यहाँ से आएंगी, obviously now he can see your arm, correct? जैसे आप हाथ गोल घुमा के लेके आएंगी, उनको नजर आएगा कि हाथ आ रहा है, he will grab your hand. So what we do is हम गर्दन के बिल्कुल साथ, जो गर्दन की लाइन है उसके साथ अपने हाथ को exactly, हाँ, ठीक है. So you will हाँ, तेजी से आप अपने लेके आएंगे और अपने elbow को उनके चिन के नीचे रखेंगे. Let's go. There you go. Now, हाँ, अब इस हाथ को you'll grab your arm like this from here. Yes, keep going, keep going. Yes, there you go. That's a tap. So what happens is यहाँ पे उन्होंने tap कर दिया, which means that yes, it's working. Please let me go, and she let him go. जब कोई problematic situation होती है तो उस time people don't really know how to tap. Number one, जो हम बोलते हैं आम आदमी को पता नहीं होता कैसे tap करना है, because this is a trained person thing. Secondly, even if they tap, it's such a situation जहाँ पे एक life threatening situation भी हो सकती है कि इतना ज़्यादा अब्बू ने जो है ना आपके भाई को मारा कि उनकी कोई हड्डियाँ टूट गई, कुछ हो गई. So it's a life threatening situation, it's a compromising situation. तो उसमें what do you decide to do? तो फिर situation को handle करना, decision making आपके हाथ में है, right? कि आप अपने भाई को, छोटे भाई को या छोटी बहन को पिटते हुए देखेंगे या आप उसके बारे में कुछ करेंगे. So everything depends on you, and then this is how it's going to go. अगर ये real life situation है and मैं अपना arm उसके वो करती हूँ, but मैं चाहती हूँ कि इसको भी कोई harm ना हो, ना? तो कितने seconds तक या कितने time तक मुझे उसको hold करके रखना चाहिए? 5 to 7 seconds जब आप hold करेंगी, you'll start feeling dizzy? No, आपको feel होगा कि उनकी body बिल्कुल ढीली हो गई है. Okay. अक्सर लोग हमसे ये क्वेश्चन पूछते हैं अगर वो फेक कर रहे हो, कि अगर वो एक्टिंग कर रहे हो ये सब करने की, वो इतने अगला बंदा इतने गुस्से में था, वो दूसरे को मार रहा था, पीछे से किसी ने उनको चोक किया और उनको समझ नहीं आ रही हो क्या रहा है, तो वो उस टाइम एक्टिंग करेंगे बेहोश होने की, या ही विल ट्राई टू स्ट्रगल एंड गेट आउट ऑफ देयर. राइट? सो ये माइंडसेट की बात है. ऑब्वियसली हम आपको दिखा रहे हैं, आपको पता है कि क्या होने वाला है, विच इज वाई इन्होंने आपका बाजू पकड़ा, उनको ही इज अवेयर ऑफ द सिचुएशन. लेकिन जब ये फॉर इंस्टेंस ये मुझे मार रहे हैं, इनको पता नहीं है कि ही इज नॉट एक्सपेक्टिंग कि कोई आके मुझे बचाएगा. अचानक से आप पीछे से आ जाती हैं, यू चोक हिम एंड यू स्क्वीज ऑन दैट चोक रियल हार्ड. ही इज नॉट गोइंग टू नो व्हाट्स हैपनिंग, और इनको समझ भी नहीं आएगी. बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते कि आप अपनी गली में चलेंगी और कोई आके आपको कैट कॉल करेगा या टच करेगा तो आप डर जाती हैं, सहम जाती हैं. द एग्जैक्ट सेम थिंग इज गोइंग टू हैपन टू हिम. ओके. और तब तक वो जो अब्यूज हो रहा था, बंदा विक्टिम था, वो भाग के जा भी सकता है, राइट? ऑब्वियसली देन इट्स दिस इज इन द हाउस, राइट? तो इसमें देन यू हैव टू सी अगेन, लाइक आई सेड, डिसीजन मेकिंग आपके हाथ में है. इफ यू आर वेल ट्रेन्ड, आपको अगर पता है, दूसरी जो मैं सिचुएशन बता रहा था उसमें ये है कि व्हाट यू डू इज यू मेक द पर्सन डिसएंगेज. आप या तो उनको नीचे गिराते हैं, आप उनको ऐसे फिजिकली कंट्रोल कर लेते हैं कि दे कैन नॉट ट्राई एंड डू एनीथिंग.